So we'll be reading paediatrics. उसके आगे we'll be reading everything. So सबसे पहला जो टॉपिक है we'll be reading fluid and electrolyte balance. अच्छा, so fluid and electrolyte balance में हमें क्या पढ़ना है कि so changes in the body fluid composition happens during transition from fetal to extrauterine life. यूट्रस के बाहर जब निकलते हैं तब फ्लूइड के कॉम्पोजिशन में चेंज आता है. नियोनेट्स आर बोर्न विद एन एक्सेस ऑफ टोटल बॉडी वाटर प्राइमरली इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. मतलब सेल्स के बाहर में जो फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में. द डायूरेसिस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ ECF. मतलब लोग बहुत ज़्यादा डायूरेसिस यानी सुसु करते हैं. एंड दस TBW. So the term neonate loses about 7 to 10% of the body weight during the first 3 to 5 days of the life. Preterm neonates जो होता है have proportionately higher total body weight. Total body weight ही है ना TBW and may lose up to 10 to 15%. 10 से 15 यानी जो प्री टर्म है वो ज़्यादा फ्लूइड लॉस करेंगे ऑफ birth weight during the first week of life. So SGA neonates have lesser TBW and loses less weight than the AGA counterparts. I really don't know what's the abbreviation. If you give me just 1 second, I'll Google it. TBW ना TBW in pediatrics. टोटल बॉडी वाटर होता है. TBW इज टोटल बॉडी वाटर. तो जो प्री टर्म होते हैं उनके पास ज़्यादा टोटल बॉडी वाटर होता है. और AGA क्या होता है? लेट मी सर्च फॉर दैट. इट्स अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज. तो फिर से पढ़ते हैं. तो जो डायूरेसिस होता है फर्स्ट वीक में वो रिज़ल्ट करता है लॉस ऑफ द ECF और टोटल बॉडी वाटर का लॉस होता है. सो टर्म नियोनेट जो होता है 7 से 10% बॉडी वेट लूज़ करता है 3 से 5 डे में. बट जो प्री टर्म होता है वो उनके पास ज़्यादा टोटल बॉडी वाटर होता है तो वो 10 to 15% बर्थ वेट जो है वो लूज़ कर देते हैं. तो what was SGA? स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज जो होता है स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज का जो नियोनेट होता है हैव लेसर टोटल बॉडी वेट एंड लूजेस लेस वाटर देन एप्रोप्रिएट जेस्टेशनल एज काउंटर पार्ट्स वाले का. ना आगे देखते हैं. द हार्ट किडनी स्किन एंड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. In neonates, kidney have a limited capacity to concentrate or dilute urine due to a lower glomerular filtration. GFR कम होता है इस वजह से किडनी पर्टिकुलर रेंज में ही फिल्टर कर पाएगा. एंड रिड्यूस्ड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल tubular sodium reabsorption. So in addition to the kidney and GI system, water losses occur due to evaporation.
from the skin and respiratory tract. So intense water loss जो होता है IWL, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इवोपोरेशन, सो इनसेंसिबल वाटर लॉस कहते हैं. सो इनसेंसिबल वाटर लॉस जो होता है हाइयर इन प्री टर्म में ज़्यादा होता है इन्फेंट्स ओइंग टू देयर थिन स्किन. Fever increases, fever, increased respiratory rate, radiant warmer, and phototherapy increases insensitive water loss. ठीक है. Now let's just get ahead with it. So, guidelines for fluid therapy. Fluid देने का guidelines क्या है? The neonate of 1 kg या फिर more या फिर 28 वीक या फिर more, otherwise not sick, can be fed enterally with breast milk. The neonates between 1 kg and 1.8 kg या फिर 28 to 33 weeks require alternate feeding method using gastric tube or paladi, while the neonates of 1.8 kg या फिर 34 weeks or more can accept breastfeeding directly. मतलब इसको देना है हमें 1 kg 28 वीक का बच्चा जो है उसको हम लोग ये से देंगे, IV फ्लूइड देंगे. उसके बाद 1000 से 1.8 मतलब 1 kg से 1.8 kg वाला बच्चा या 28 वीक से 33 वीक वाला बच्चा को गैस्ट्रिक ट्यूब लगा के देंगे. और जो बच्चा जिनका 1.8 kg से ज़्यादा है वेट या 34 वीक से ज़्यादा बच्चे वाले को ब्रेस्ट फीड डायरेक्टली करवा सकते हैं. तो मदर अगर पूछेगी कि हम कब अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं तो आपको बोलना 34 वीक का जब हो जाए या फिर जब इसका वज़न 1.8 kg से ज़्यादा हो जाए, तब आप अपने बच्चे को सेफली दूध पिला सकते हैं. ठीक है. अब आगे पढ़ते हैं. ठीक है. IV फ्लूइड. सो स्मॉल और सिक न्यूनेट जो होता है जिसको IV फ्लूइड इनिशियली ज़रूरत पड़ता है. न्यूनेट्स लेस देन 28 वीक्स शुड रिसीव IV फ्लूइड रूटीनली. Sick neonates, irrespective of the weight or gestation, such as those with respiratory distress है, जिनको significant asphyxia है, feed intolerance है, hemodynamic instability है, are also candidate of IV fluid. A peripheral IV line is the most common route used to provide fluid. Peripheral IV line, central नहीं, peripheral we use. Now the amount of fluid required depends upon the birth का weight, कि बच्चा का कितना वेट हो रहा है. सो कितने से कम के बच्चे, 28 वीक से कम का बच्चा IV फ्लूइड आप दोगे. डे ऑफ लाइफ, क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द फ्लूइड बैलेंस, वेल हाइड्रेटेड वर्सेस ओवर या फिर अंडर हाइड्रेटेड, ये क्लिनिकली असेस करके फिर हम लोग IV फ्लूइड देंगे उसे. न्यूनेट विथ बर्थ वेट जिनका 1.5 kg से ज़्यादा है बर्थ वेट, infant receiving IV fluid must excrete a solute load of about 15 milliosmol per kg per day in the urine. To excrete this solute load at a at a urine osmolarity of 300 milliosmol per liter, the infant would have to pass a minimum of 50 milliliter per kg per day of urine. ठीक है. टोटल 300 मिली ऑस्मोल निकालना है तो उसके लिए इन्फेंट को पास करना पड़ेगा कितना, 50 ml per kg per day of urine. The initial fluid should be 10% dextrose.
डेक्सट्रोज में क्या है? ये आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा विथ नो इलेक्ट्रोलाइट, कोई इलेक्ट्रोलाइट के बिना देना है। टू प्रोवाइड अ ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट ऑफ 4 to 6 mg per kg per minute with the insensitive water loss of 20 ml per kg. The initial fluid amount should be 60 to 80 ml per kg per day. पीडियाट्रिक्स में यही तो है, बहुत ज़्यादा क्या है, डोज वोज मैटर करता है। नाउ उसके बाद क्या है कि एज द इन्फेंट ग्रोज एंड रिसीव एंटरल फीड्स द सल्यूट लोड इंक्रीजेस। ठीक है, सल्यूट का लोड बढ़ जाएगा, रिक्वायर्स मोर फ्लूइड टू एक्सक्रीट द सल्यूट लोड। तो फीकल लॉसेस and growth also needs extra water. Therefore, the fluid requirement increases by 15 to 20 ml per kg per day to a maximum of 150 ml per kg per day by the 7th day. 150 ml बढ़ जाएगा, पहले कितना था? 15 से 20 ml था। हाय शांग। सो द न्यूनेट नीड्स सोडियम एंड पोटेशियम आफ्टर 2 दिन। 2 दिन के बाद उसको सोडियम और पोटेशियम का भी ज़रूरत पड़ता है बच्चे को। न्यूनेट with a birth weight less than 1.5 grams. So the urine output in these neonates is similar to neonates of 1.5 kg or more. Due to higher insensitive water loss जो होता है, these neonates need 80 ml per kg per day of 10% dextrose on day 1. Proper dressing of the neonate by providing frocks, caps, socks reduces insensitive water loss under the radiant warmer. As the skin matures, the insensitive water loss जो है वो डिक्रीज हो जाता है और जो fluid requirement है becomes similar to bigger neonates. These neonates therefore need fluid increments of 10 to 15 ml per kg per day up to the maximum of 150 ml per kg per day by the 5th to the 7th day. Sodium and potassium should be added to IV fluid after then. Now the completion of IV fluid therapy includes extravasation, local phlebitis and fluid overload. Because IV fluid therapy is a significant risk factor for healthcare associated infections. देखो आपका है बर्थ वेट 1.5 kg से कम वाले का बच्चा का और उससे ज़्यादा वाले का बच्चा का। डे 1 में आप कितना फ्लूइड दोगे? जो जिनका वेट कम है उसको ज़्यादा फ्लूइड देना है, बस आप ये याद रखो। और उनका फ्लूइड की रिक्वायरमेंट हर दिन बढ़ते जा रहा है। कितने के से बढ़ रहा है? ये अभी 15 बढ़ा 15 बढ़ा, 10 बढ़ा, 10 बढ़ा, 10 बढ़ा, 10 बढ़ा। ठीक है, 15 15 10 10 10 10 10 इस हिसाब से इस रेट से बढ़ा है। और ये जो मोर देन 1.5 kg है ना, इनका हमेशा 15 बढ़ा है रिलेटिवली। तो बेसिकली डे 7 में आकर के दोनों 150 पहुंच गए, क्योंकि ये जो मोर वेट वाले थे इनका हर दिन का 15 का इंक्रीमेंट हो रहा है, पर जो कम वेट वाले थे उनका शुरू का 2 दिन का 15 का इंक्रीमेंट हुआ, बाकी सारा जो है 10 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, और जो छोटे वेट वाले थे, जो कम वेट वाले थे, उनका हम लोग ज़्यादा डे 1 में भी ज़्यादा फ्लूइड से शुरू किए थे। नाउ अब क्या लिखा है कि HAIs के लिए बहुत ज़्यादा ये हो जाते, प्रोन हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि IV फ्लूइड लगा रहे हैं, मतलब IV इंजेक्शंस लगा रहे हैं। All asepsis precautions must be followed during the insertion of the IV cannula and administering fluid
to reduce the risk of HAI. Neonates should receive oral feeding. Once stable बच्चा स्टेबल हो जाएगा तो उसको ओरल शुरू कर देना है. The IV fluid can be stopped once oral feed continues. About 2 to 3 days of the daily fluid requirement. IV sites should be inspected frequently. So, monitoring of fluid and electrolyte status. Monitor fluid therapy every 12 to 24 hours in a neonate on IV fluid. Body weight का क्या है? Serial weight measurement can help in knowing the adequacy of fluid. यूजुअली टर्म बेबी जो होते हैं वो लूज़ करते हैं 1 से 3% ऑफ देयर बर्थ वेट डेली. नाउ द क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ 7 to 10% इन द फर्स्ट वीक. प्री टर्म न्यूनेट्स जो होते हैं वो लूज़ करते 2 to 3% ऑफ देयर बॉडी वेट डेली. यानी प्री टर्म्स जो है वो ज़्यादा बॉडी लूज़ करते हैं बॉडी वेट with a cumulative loss of 10 to 15% in the first week of the life. Failure to lose weight in the first week of life may indicate excess fluid administration. Excessive weight loss during the initial few days, failure to regain birth weight by stipulated age, or failure to gain weight afterwards would indicate fluid deficit. ठीक है. So, clinical examination. The usual physical signs of dehydration are unreliable in neonates. Infant with 10% dehydration may have sunken eyes and fontanelle, uh, and cold clammy skin, poor skin turgor, and oliguria. Infant with 15% or more dehydration would have signs of shock, जैसे हाइपोटेंशन, ट्रैकीकार्डिया, वीक पल्स होने लगेगा. यूरिन आउटपुट अ वेल हाइड्रेटेड न्यूनेट वुड पास 1 से 3 ml पर kg पर आवर. तो ये फ्लूइड मैनेजमेंट हो गया बच्चों का. अब फीडिंग ऑफ द लो बॉडी वेट न्यूनेट. अब ये है कि उनको फीडिंग कैसे कराते हैं. लेवल ऑफ सिकनेस देखेंगे, एबिलिटी टू फीड देखेंगे, प्रोग्रेशन ऑफ ओरल फीड्स देखेंगे, चॉइस ऑफ मिल्क देख लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. है ना. So, good nutrition is the key to survival and optimum growth and development of the low body weight infant. Early nutrition influences long-term neurodevelopmental outcome. So, healthy term neonates can directly breastfeed with some assistance in the early postnatal period. In contrast, feeding of the low birth weight infant have the following limitation. Over 1/3 of the low body weight infant जो होते हैं are born with preterm या फिर inadequate feeding skills. They may not be able to breastfeed efficiently and require feeding by alternative methods such as पालादी या फिर गैस्ट्रिक ट्यूब से उनको पिलाना पड़ता है. मेनी लो बर्थ वेट जो न्यूनेट होते हैं वो सिक होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द लाइफ, इंटरफेयरिंग विद द एंटरल फीडिंग. ना प्री टर्म इन्फेंट जो होते हैं हैव हायर फ्लूइड रिक्वायरमेंट in the first few days due to higher insensitive weight loss. Now, since intrauterine acceleration of many nutrients occur in the third trimester, preterm infant, particularly those born before 32 weeks of gestation, so पहले जो born हो गए, have lower body stores necessitating supplementation.
Now, because of gut immaturity, the frequency have they frequently have feed intolerance. So, direct and exclusive breastfeeding is the goal of feeding all low body weight infant. However, many low birth weight infants जो होते हैं may not be able to accept breastfeeding during the initial few days. ब्रेस्ट फीड कर ही नहीं पाएंगे. सो द इन्फेंट नीड्स स्पून या पालदी या फिर गैस्ट्रिक ट्यूब feeding. Some neonates require IV fluid, may not receive enteral feeding. So the appropriate method of feeding depends upon the following factor: whether the infant is sick or not, feeding ability of the infant determined by the gestation and birth weight. So level of sickness क्या होता है? Sick infant, this group includes infant having significant illness such as respiratory distress requiring mechanical ventilation, shock, seizure. These infants require IV fluid initially. These infants should receive enteral feeding at the earliest once reasonably stable. The choice of feeding method depends upon the infant's gestation and clinical condition. So enteral feeding is vital for a sick neonate. Many sick infant can receive enteral feeding once hemodynamically stable because before complete recovery. इन्फेंट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिनको होता है, रिसीविंग मैकेनिकल वेंटिलेशन can be fed enterally once the acute phase is over. Similarly, sepsis or asphyxia जो होता है, in the absence of shock or NEC, are not contraindication for enteral feeding. So, health of low birth weight infant. Enteral feeding should be initiated immediately after the birth in healthy low birth weight infant with the appropriate feeding method. So, ability to feed. Breastfeeding requires effective suckling, swallowing, and proper coordination between the suckling, swallowing, and breathing. So, these skills mature with gestation. A robust suckling may not be present until 32 to 34 weeks of gestation. Coordination between suckling, swallowing, breathing may not mature until 34 weeks, and it fully matures by 37 to 38 weeks. The initial feeding method is individualized based on the infant's gestation or birth weight and feeding skills. So stable low birth weight infant जो होते हैं should be offered direct breastfeeding irrespective of their initial feeding method. This helps faster maturation of the small infant's feeding skill and improves lactation in the mother. Non-nutritive suckling, pallidy and gastric tube feeding. So, progression of oral feeds. Progression of feeding method is summarized in table this. So, term low birth weight infant जो होते हैं started on IV fluid because of their sickness can be put on breast once they are hemodynamically stable. So, maturation of oral feeding skills and choice of initial feeding method of low birth weight infant. अगर लेस देन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन है तो इनएडिक्वेट सक्लिंग एफर्ट होता है उनमें, लैक ऑफ प्रोपल्सिव गट मोबिलिटी भी नहीं होता है. सो IV फ्लूइड देंगे उनको. पेट का भी मोटिलिटी नहीं है, फिर क्या करेंगे दे करके. उसके बाद 28 से 31 वीक में होता है सक्लिंग बर्स्ट डेवलप कर दिया जाता है, बट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है सक या फिर स्वॉलो या ब्रीथ करने में.
तो ओरोगैस्ट्रिक या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग विथ ओकेजनल स्पून या पालाडी फीडिंग करेंगे 32 से 34 वीक में स्लाइटली मैच्योर सक्लिंग पैटर्न. Coordination between breathing and swallowing begins. So feeding by spoon or paladi. Now 34 weeks से ज़्यादा हो गया तो mature suckling pattern. Coordination between breathing and swallowing. Breast feeding करना शुरू कर देंगे हम लोग. So 34 weeks से ज़्यादा हो गया तो breast feeding करेंगे. Initiate breast feeding. Observe it. Position and attachment are good. Able to suck in effectively and long enough, about 10 to 15 per minute. ब्रेस्ट फीडिंग यस, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है फिर भी तो स्टार्ट फीडिंग बाय स्पून या पालाडी, या फिर 32 से 34 वीक वाले बच्चों को भी स्पून या पालाडी से. ऑब्जर्व इट. एक्सेप्ट वेल, बच्चा एक्सेप्ट कर ले रहा है विदाउट स्पिलिंग या कफिंग, एबल टू एक्सेप्ट एडिक्वेट अमाउंट. यस तो स्पून या फिर पालाडी का ही फीडिंग करवाओ. नहीं तो स्टार्ट करना है ऑन ओरोगैस्ट्रिक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब. ये 28 से 31 वीक वालों को भी देते हैं. ऑब्जर्व इट. वॉमिट और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है तो उसको मत दो, उसको गैस्ट्रिक ट्यूब में फीड करो. 28 वीक वाले जो होते हैं उनको भी स्टार्ट आईवी फ्लूइड कर दो. चॉइस ऑफ मिल्क देख लेते. चॉइस ऑफ मिल्क क्या होता है. सो द चॉइस ऑफ मिल्क, सो दिस इज पालाडी and this is gastric tube feeding. The choice of milk in low birth weight infant is as following. Mother's own milk, MOM कहते हैं, mom. Then we have pasteurized donor human milk. Then we have preterm formula, term formula. So ये सब क्या होता है. एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क. ऑल मदर्स शुड बी काउंसल्ड एंड सपोर्टेड इन एक्सप्रेसिंग ब्रेस्ट मिल्क फॉर फीडिंग देयर प्रीटर्म इन्फेंट. द एक्सप्रेशन शुड आइडियली बी इनिशिएटेड विद इन आवर्स ऑफ डिलीवरी so that the infant gets colostrum. After that, it should be done every 2 to 4 hours to attain good lactation. Expressed breast milk can be stored for 6 hours at the room temperature and 24 hours in the domestic refrigeration 2 to 8 degrees Celsius. सिक मदर या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू ब्रेस्ट फीडिंग क्या है. इन दीज रेयर सर्कमस्टांसेस द ऑप्शंस आर पैस्चराइज्ड डोनर ह्यूमन मिल्क यूज़ कर लो, या प्री टर्म फार्मूला फॉर वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट, या फिर टर्म फार्मूला इन इन्फेंट वेइंग 1.5 kg or more at birth. Once the mother becomes stable or does not have the contraindication, these infants should be started on exclusive breastfeeding. Now infant on IV fluid. अगर जो इन्फेंट IV फ्लूइड में है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होता है. सो स्टार्ट ट्रॉफिक फीड बाय और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब और मॉनिटर करना है फीड टॉलरेंस को. अगर एक्सेप्ट कर रहा है अच्छे से IV फ्लूइड को तो ग्रेजुअली इंक्रीज द फीड वॉल्यूम एंड टेपर एंड स्टॉप IV फ्लूइड. देन इन्फेंट को ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब में शिफ्ट कर दो 30 to 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में. ट्राई स्पून फीडिंग once or twice a day. Also put on mother's breast and allow non-nutritive suckling. भले ही दूध ना पी रहा हो पर सकल करने दो उसको. If accepting spoon feeds well, तो gradually increase the frequency and amount of the spoon feed. Require orogastric feeds accordingly. Now infant or spoon or paladi feeds, put them on mother's breast before each feeding. Observe for good attachment and effective suckling. If able to breastfeed effectively, taper and stop spoon feed once the mother is confident. You know what? मैंने सोचा कि मुझे कौन सा फील्ड लेना है MBBS के बाद.
So I thought कि why not take OBGYN pediatrics. But now I'm realizing why I want to take these subjects, because I have two idols there. एक तो श्रद्धा मैम और एक ओजस्विनी मैम, और वो दोनों मेरे को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि आई कैन टेक बोथ द सब्जेक्ट जो भी मुझे मिले. आई रियली लाइक बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स. So weird how teachers influence people, their students, right? Oh. चलो आगे पढ़ते हैं. So how much to feed? Breastfed infant. Infant who can suckle effectively should be breastfed on demand. Small neonates जिनका 2 kg से कम है weight may not be relied upon और demand feeding are fed every 2 to 3 hours में उनको feed करना है. Now infants who are fed by spoon या पालाडी or by gastric tube, तो very low birth weight infant जो होते हैं, जो less than 1.5 kg का होता है, needs about 80 ml per kg of fluid on the first day of their life discussed earlier. It needs to be increased by 10 to 15 ml per kg per day to 150 ml per kg per day by the end of the first week of their life. So low birth weight infant जो होते हैं ना, more than 1.5 kg के आर यूजुअली गिवन 60 ml, वही टेबल के बारे में 60 ml per kg of fluid on the first day, and fluid intake increases by about 15 ml per kg per day to reach a maximum of 150 ml per kg per day by the end of the first week of the life. The volume of one feed can be calculated by dividing the total feed given by the number of feeds planned in 24 hours. So nutritional supplementation. बर्थ वेट ऑफ 1.5 से 2.5 kg का जो बच्चा होता है, दीज इन्फेंट्स आर लाइकली टू बी बॉर्न एट और नियर टर्म जेस्टेशन. दे नीड विटामिन डी और आयरन उनको दे दो, ठीक है. जिनका वेट 1.5 kg से कम है, दीज इन्फेंट्स यूजुअली बॉर्न इन 32 से 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन have inadequate body store of most nutrients. Since EBM has insufficient protein, energy, calcium, phosphorus, trace element, iron, zinc, vitamin D, E, K. These infants need multi-nutrient supplementation until term gestation 40 weeks तक, until the expected date of delivery. These additional nutrients can be provided by fortification of expressed breast milk with human fortifiers. HMF डाल देना. Fortification increases the nutrient content of the milk without compromising its other beneficial effect. As human milk fortifier does not provide adequate iron, the same has to be provided separately. Fortification of supplementation of mineral and vitamins should be continued till gestation of 40 weeks in very low birth weight infant. Now after 40 weeks, only vitamin D or iron जो है needs to be supplemented, similar to infants with birth weight greater than 1.5 kg. हाय गाइस, चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है. सो ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ लो बर्थ वेट इन्फेंट. So regular growth monitoring helps assess the nutritional status and adequacy of feeding in low birth weight infant and identifies those infant with inadequate weight gain. All low birth weight infant जो होते हैं should be weighed daily or every other day until discharge. The length and head circumference should be recorded weekly.
Both term and preterm low birth weight infant tend to lose weight about 10 to 15% respectively in the first 7 days. They regain birth weight by 10 to 14 days. After that, the weight gain should be at least 15 to 20 grams per kg per day till a weight of 2 to 2.5 kg is reached. After this, a gain of 20 to 40 grams per day is considered appropriate. Now, a growth chart. A growth chart, Fenton's chart जिसको कहते हैं, is a simple way to monitor growth. Serial plotting of weight and other anthropometric indication in the growth chart allows for tracking an infant's growth with respect to a reference. It helps in early identification of growth flattering. So inadequate weight gain में क्या करना है? Inadequate weight gain is common problem. It may result in failure to thrive या फिर wasting in the first year of life. Management consists of the following: ensure adequate breastfeeding support. Mothers should use proper technique and right feeding frequency, including night feedings. Now, ensuring optimum feeding frequency and quality of milk for spoon या फिर पालडी feeds. Ensuring night feeding. So supplementing breastfeeding with a spoon या feeds if the infant ties tires out while suckling from the breast. Ensure the correct technique of milk expression and paladdy feeding. Ensure optimum thermal protection. जॉन्डिस का क्या दिया है? प्रॉब्लम्स क्या है? लार्जर आरबीसी वॉल्यूम फॉर बॉडी वेट. So immaturity of hepatic enzymes and hepatic excretory capacity. Blood brain barrier होता है. Increased risk of bilirubin encephalopathy. Management क्या? This has been discussed in the section of the jaundice. Causes of inadequate weight gain क्या होता है? Inadequate intake, breastfeeding infant, incorrect feeding, improper positioning or attachment, less frequent breastfeeding, not feeding in the night hours, infant on spoon or paladdy feeds, incorrect methods of feeding. एग्जाम्पल एक्सेस स्पिलिंग कर रहा है बच्चा, इनकरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ कैलकुलेशन, इनफ्रीक्वेंट फीडिंग, नॉट फोर्टिफाइंग द मिल्क इन वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट्स, इंक्रीज्ड डिमांड. तो हाइपोथर्मिया और कोल्ड स्ट्रेस में डिमांड बढ़ जाता है दूध का. क्रॉनिक इलनेस में, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्फेजिया में, मेडिकेशन सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड. हेमाटोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी जैसे प्रॉब्लम पॉलीसाइथेमिया है, यानी प्लासेंटल इनसफिशिएंसी स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइसिस विच रिजल्ट्स इन पॉलीसाइथेमिया, especially in intrauterine growth retardation neonates. Polycythemia, more than 65% of the hematocrit, produces hyperviscosity with decreased oxygen perfusion. Manifestations include jitteriness, respiratory distress, cardiac failure, feeding intolerance, hypocalcemia, hyperbilirubinemia. So anemia कैसे हो सकता है? The accelerated destruction of the fetal RBC, low reticulocyte count, and inadequate response of the bone to erythropoietin causes anemia of prematurity. The need for blood sampling can predispose low birth weight to the risk of severe anemia. बार बार उससे खून लेंगे तो. Now management क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया क्या है? सिस्टमिक इन्फेंट्स, सिम्टोमेटिक इन्फेंट्स या फिर एसिम्टोमेटिक जो होते हैं विथ हेमाटोक्रिट
greater than 75% require partial exchange transfusion, which involves removal of 25 to 50 ml per kg of the blood and replacement with normal saline. For others, management include increased frequent fluid intake. So anemia में क्या होता है, all low body weight neonate जो होता है should receive iron supplementation with a dose of 2 to 3 mg per kg from 2 months until 2 years of the age. Blood sampling should be minimized. Transfusion are given as per the institution protocol. Now, immature organ system in pre-term infant. ये क्या होता है? Respiratory distress syndrome. This is described in detail later. So, intraventricular hemorrhage. Preterm infants have a fragile, highly vascular germinal matrix near the brain's lateral ventricle. Respiratory distress, mechanical ventilation, vigorous resuscitation can cause rupture of these vessels, leading to adverse neurological sequelae. Preventive measure includes giving antenatal steroid, minimal or gentle handling, avoiding rapid fluid bouses, or infusion of hyperosmolar solution, and avoiding high pressure during ventilation. So retinopathy of prematurity. So retinal vessels grow from optic disc. रेटिनल वेसल्स जो है वो ऑप्टिक डिस्क से ग्रो करता है टू द पेरिफेरी फ्रॉम 18 to 44 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. A host of postnatal factors such as high or low oxygen saturation, sepsis, blood transfusion, sickness, poor nutritional support may injure vascular growth of the retina. The retinal vascular injury can induce pathological proliferation of retinal vessel. जैसे वैस्कुलर इंजरी हो जाने का क्यों होता है? ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, सेप्सिस की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, सिकनेस की वजह से, पुअर पोस्ट नेटल न्यूट्रिशन की वजह से वैस्कुलर ग्रोथ हो जाता है, कर देता है, इंजर कर देता है वैस्कुलर ग्रोथ को रेटिना में. तो वो पैथोलॉजिकल प्रोलिफरेशन होने लग जाता है रेटिनल वेसल का, जिससे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो जाता है. वाइल इन मोस्ट न्यूनेट्स retinopathy of prematurity would regress in time, it can progress to retinal detachment and blindness if left untreated in some neonates. The completion can be reduced with rational use of oxygen, may maintain a SpO2 between 91 to 95%, avoiding unnecessary transfusion, and requires screening of eye for early detection. Now, advanced stage of ROP requires peripheral retinal ablation by laser. हियरिंग इम्पेयरमेंट ये भी हो जाता है बच्चों में. ये पहला क्या था? इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज. ब्रेन का लेटरल वेंट्रिकल्स होता है ना, उसके बगल में फ्रेजाइल जर्मिनल मैट्रिक्स ये सब होता है. तो उसको वेंटिलेट करेंगे, विगरस रिससिटेशन करेंगे तो ये सब वेसल रप्चर कर जाता है. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होता है. और ये फिर प्रिवेंशन में स्टीरॉयड देंगे, मिनिमम हैंडलिंग करेंगे, रैपिड फ्लूइड और ये सब देंगे. ये है कि ब्रेन का हेमरेज. दूसरा है आँख का हेमरेज. तीसरा है हियरिंग, कान का इम्पेयरमेंट. सो प्रीटर्म इन्फेंट जो होते हैं वो हायर रिस्क में होते हैं हियरिंग लॉस के. रैशनल यूज़ ऑफ ओटोटॉक्सिक ड्रग, प्रिवेंटिंग हाइपोक्सिया and optimal treating jaundice. Routinely early screening can minimize this complication. फिर prolonged hospital stay. So low birth weight neonates जो होते हैं often need extended stay in the hospital, which could be substantial in very small या फिर sick neonate. It is an emotional and financial trying time for all families. It results in their long separation from their parents and usually incur high expenses.
keeping parents involved in the decision making and providing emotional support can help the families greatly. Now, criteria for discharge क्या है? So, the clothed neonate can maintain normal body temperature आउटसाइड द रेडियंट वार्मर और इंक्यूबेटर. अगर बच्चा अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है तो हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं. न्यूनेट हैज़ बीन गेनिंग वेट consistently for the few days, tracking weight, length, and head circumference using a growth chart can help determine whether the growth is adequate. There are separate growth charts for the term and preterm infant. The neonate should be breastfeeding well and accepting feed using paladi and spoon. Mother is adequately trained in feeding the baby. Absence of significantly morbidity and the neonate parents have well understood how to give medicines or supplementation after discharge. All screening जैसे कि ROP, hearing, metabolic ये सब have been performed before discharging. Some infant may need ROP screening after discharge. Ensure the neonate receives all nutritional supplements including multivitamins, iron, calcium, vitamin D. Immunization with BCG, hepatitis B, OPV is given. Patients have understood how to recognize danger signs and when to come back. Follow up within 3 to 7 days of the discharge to ensure the neonate has adapted well to the home environment. ना ये ग्रोथ चार्ट है. प्री टर्म के लिए फेंटन्स चार्ट होता है अप टू 50 वीक्स ऑफ पोस्ट मेंस्ट्रुएशन एज. उसके बाद WHO चार्ट यूज़ हम लोग करते हैं. फेंटन और WHO. पल्मोनरी कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या है, लंग्स का क्या क्या कॉज है. सो अभी तो हम लोग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पहुँचेंगे, तब वी नीड दिस. सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करने से पहले लेट्स एंड दिस सेशन एंड स्टार्ट अ न्यू वन. ओके.